Hello, everyone. Today we have with us Mr. Ajay Tyagi. He is a counselor for child development, special educator, and early childhood educationists. We as parents have never really taken any parenting classes, but we are fortunate to have experts like him to ask all our queries related to parenting. So, from my viewers and myself, I have a few queries which we are going to ask Uncle here and try to get answers to as many as we can as time permits. So, Uncle, we'll go with the first question. What do you think is the best gift we can give to our children? Best gift. Yeah. The best gift you can give to your child is immense love Okay. and just make him or her understand how he or she feels when they are happy. Happiness is the biggest gift. If the Oh. child is happy, he Uh-huh. will listen you, he'll follow you, and if the child is happy, the great bonding will develop, Uh-huh. which is the basic requirement in the present scenario. And I think this is the best gift any parent can give to the child. So, Uncle, making them happy might sometimes cross the boundary and get into the pamperedness. Matlab, where do we draw a line between pampering and making them happy? See, making them happy doesn't require, it's not a big rocket science. You need to understand what the child is actually looking forward. Sometimes you know what happens. The child is trying to drag your attention, but you are busy somewhere, so the child is not happy. If you just give him or her a little hug or make him or her understand, hey, mama is little busy, I'll come back to you, just give me a little time, I'm so sorry. Now that nowadays kids are very smart, very intelligent, they understand, but you'll have to develop the communication with them. There should be a very good communication between you and your child. So making them happy doesn't need to give them the lots of chocolates and toffees and lots of toys or gadgets. Making someone happy is not like that. And the better way to understand it, just put yourself in any situation, either with your parents or with your spouse. At what are the moments when you really feel happy? As simple as that. Okay, so keeping ourselves in their shoes and trying it. Yeah. Okay, when you talked about attention in this question, there is another question one of the viewers has asked. She said she has two kids, and when the younger one came, the elder one started feeling attention lacking, and he sort of started throwing tantrums, and he felt that as if his love is being taken away, the kind of attention he was getting he's not getting. So I think it's a common problem with a lot of parents face. Obviously, the younger child, because he's too young, can't take care of himself, he's not independent yet, needs more attention. But how do we equally love both our kids? I mean, all the parents equally love both their children. So how do they help the elder one? See, it's a very tricky situation, very tricky situation. It's a human tendency. We love small things very well. When a small baby comes in a family, that becomes everyone's favorite, True. isn't it? True. Everyone's favorite. Unconditional love. Matlab, that particular baby directs unconditional love from everybody. Yeah, being. Now, elder child is also a small child. We always forget that point. The smaller one doesn't understand who's getting the more attention because those senses have not been developed by that time. But the elder one understands. So at that particular moment, we need to pay more attention to the elder one. Give him the more priorities. All the priority should be given to him or her, the elder one. And we always forget it.
And very commonly, this statement we have heard, especially in India, from Indian grandparents, "तू तो बड़ा है, वो छोटा है." True, absolutely. This is the thing. This particular statement starts hurting the elder. Correct. So it is always, parents have to be very smart at that particular time. When the elder one is around, initially उसको आप गोदी में ना लें. हम लोग बोलते हैं ना कि वैसे भी बच्चों को अगर ज्यादा देर गोदी में लो तो फिर उसको उसकी आदत पड़ती है. आदत पड़ जाती है. We always feel like that. तो पर्टिकुलरली बड़े के सामने छोटे बच्चे को ज्यादा आप बहुत ज्यादा पैम्परिंग वगैरह ना करें. और second, the best solution I have found it, because to few parents I suggested and they tried it and it worked out like anything. Oh, the thing is, just give the authority to the elder one. For example, अगर मान लीजिए कि elder child का नाम, his name is Aman. Okay. And the younger boy came in the family. So always call the younger one as the Aman ka bhai. Okay. Elder one will feel proud, he'll feel the possessiveness. All those sibling rivalries will dissolve automatically. Oh, that's because you are telling it's yours. हम लोगों से पहले normally क्या होता है कि parents say कि no, this is, indirectly they declare it कि this is our newborn baby and it's so valuable, so you be away. Indirectly we are giving that message. But when we say Aman ka bhaiya, Aman's brother, so he feels possessive, he feels the authority has been given to him. He literally feels that younger one is really mine. It's everybody's, but first of all, it is mine. He's mine. Oh. So that bonding is start developing. And just this small thing that will definitely help if the parents start giving the first priority to the elder child. So definitely the child will feel responsible. He becomes automatically, he'll become responsible and he start playing with the child. Okay. Only this small. So that's a simple yet wonderful trick to be applied. Then when you talked about grandparents, there is one more thing that I want to ask you. It's regarding potty training. When kids are too young, there is a constant pressure. अभी तक के potty train नहीं किया है, इतना बड़ा हो गया है बच्चा. और जबकि मतलब मुझे लगता है like I have 2 kids. My older one is now 9 years old. Younger one is yet 2.5. तो बड़े को भी potty train करते करते 3-3.5 साल हो गए थे. But there had always been a pressure कि यार उसको आप बार-बार वॉशरूम में ले जाके सुसु कराते रहो. उसको खुद से आता नहीं है. He can't do. अभी उसकी मसल्स उस तरह से डेवलप ही नहीं हो कि उसको जाके आप करवा सको. Plus it adds on to so much work at home. कहीं भी बच्चा कर दे रहा है, फिर आप साफ करे जा रहे हो पजामे और सब धोए जा रहे हो nappies. तो मुझे लगता है कि how do we politely explain कि it's difficult, और जब बच्चे का टाइम आएगा सीख ही जाता है ना, बड़े वाला भी सीख. I can understand. It's very difficult scene when grandparents are around and they really indulge in each and every and all small things, especially related to the grandchild, because they also feel कि ये उनका बच्चा है. And if anything goes wrong, the blame goes to mother. True. I can understand. But thing is कि here the actual role of a mother goes on a slightly on a wider range. Grandparents are also like a child. That's so well said. And here you'll have to be very careful in using the words. Your vocabulary counts a lot. If you are using the words like अरे रहने दो हम कर लेंगे, है ना, आप परेशान क्यों हो रहे हो, इस टाइप के अगर है ना वर्ड्स बहुत ज्यादा बीच बीच में अगर आते हैं तो they feel offended.
we don't know anything. Oh, actually, they Your also vocabulary, maybe want to participate in the upbringing of the child. yeah. So the vocabulary of mother has to be very, very smartly. The selection of the words should be very smartly used. You'll have to be very slightly diplomatic also. Give them little responsibility, and then tell them, "Ki, oh God, you are." Every time you'll have to acknowledge their work, as well as you'll have to keep on making them directly, indirectly. You'll have to make them realize ki you are grateful for them. You are grateful for their being around. So again, this brings us back to the language of love, which is towards the grandparents as well. I think long back we had one discussion regarding the regarding. I suggested one book to Yeah, you. I had read it, Uncle. 5 Languages of Yeah. Love. So that And I five really love language. Read that book and just suggest it to all parents, because that book is not only for the kids, that is for us also, that is for the grandparents also, because everyone is having a love language, as a very elaborately explained in that book. I'll just sum it up within 1 minute. There are 5 love languages, 5 types of it. Everyone is having either one of them, or some are having the combination. The kids are having all 5. Yeah, correct. First one is touch. Every child loves a touch. Touch is the first love language. The child feels comfortable when you touch a child. He feels comfortable because he feels secure. Why the child loves that love language? Because he feels secure. The second one is word of praise. When you start appreciating, that is another love language. Everyone prefers praise. Third is small token gifts. Anything, any gift. Gift is a gift. Gift is also a love language. Some people really love once you give them the gift, then you can get anything done from that. And the fourth is giving them the special time. Just quality time, rather, I should say. Giving them the quality time is your fourth language. And the fifth is doing something for them. Suppose Acts of service. some which they really like. कि बोलते हैं ना, कुछ expectation होते हैं कि यार ये वाला मेरा काम ये करते तो मजा आ जाए. हाँ. So suppose you are preparing a dinner, and your husband just starts arranging the table. That is a big thing. तो वो something कुछ especially काम कर दिया उनके लिए. So that really helps a lot. Yes. That's so true. And the kids are having all these five languages in them. All these 5. As we grow, we start dropping some, but everyone is having some 1 or 2 love languages. Love languages. Yeah. Okay, Uncle, if you start analyzing it, you'll realize that out of these 5, either 1 or 2 you must be having. If I say about myself, word of praise is my love language is word of praise. Oh. That is mine. Yeah. मतलब word of praise means झूठी तारीफ नहीं, क्या बहुत अच्छे हो ये. No. Genuine praise, which is genuine होना चाहिए. मतलब हम इंसान की तारीफ ना करते, उसके काम की तारीफ करें. बिल्कुल सही बात है. Normally ये नहीं कि you look nice, you have got a very good lovely dress. No. That is not a love language part of it. The love language part about the word of praise is whatever he or she is doing, उसको appreciate. True. अच्छा अंकल, ऐसा भी होता है कई बार बच्चे फसी होते हैं खाने को लेकर. So this is another question from one of the viewers कि how to handle the fussy eaters. Yeah, in that particular condition, see, as a being a counselor for child development, I don't look only after the academic part. I look for the development. There are so many other areas also. If the child is really fussy about eating, so it's a parent's responsibility to get it checked. Is there any vitamin minerals deficiency in the child or not? Oh, okay. If the child is having some vitamin mineral deficiency, then he starts throwing tantrum regarding the
particularly he'll prefer junk food, or either he'll go for too much sweets. तो फिजिकल बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके Correct. लिए विटामिन और मिनरल्स का आप ध्यान रखें कि the child should get enough vitamins and minerals, but not pharmaceutically prepared. It should be all natural sources. Nowadays, market is full of natural sources, vitamins, minerals. So you can opt to anything. You can give them lots of fruits, something like that. Okay. Okay. So time to time, बच्चे के अंदर प्रोटीन पूरा होना चाहिए, प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स सारे विटामिन्स मिनरल्स उसकी बॉडी में जाने चाहिए. तो अंकल आपके कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना ठीक है? या बट इसमें स्पेशली मैं कैल्शियम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट रिकमेंड करता हूँ. कैल्शियम, एवरी चाइल्ड शुड बी गिवन इनफ कैल्शियम, बिकॉज कैल्शियम में क्या होता है कि बोन्स और मसल्स डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहता है, as well as the cognitive development में calcium plays a very important role. I see. Okay. Yeah. If the child is confused, poor in maths, and normally बोलते हैं ना girls are poor in maths, ऐसा नहीं है. Even I see many boys also very poor in maths, and confusion का state है. So the direct relation is the child is having a iron deficiency. Oh. I never knew that maths could be related to iron. See, whatever we eat, that plays a very important part in our life. So the vitamin mineral balance is very much essential, very much essential. So uncle, now that maths has come into picture, I have seen some parents struggling with maths for their children. I mean, at one point of time, even I had struggled, but I had always been able to find good people, good guides to help him out. But sometimes, you know, I have seen children who are just not okay to do maths. I mean, with all best of their efforts, if they are not able to do it, so how can we, you know, just help those parents or those children to get the passing marks and just go through? Because math is not for everyone, or is it? Yeah. Before answering your question, I'd like to ask one thing. Yeah. What is the percentage of the kids in a class in general who are facing problem in maths? Is it on a higher side? No, it should be, I think it's on a lower side. Almost every second child? Yeah. Yeah. I'm not too sure how to answer this. I just wanted to understand, suppose there are, around 30 parents. Yeah. And there are 30 kids. Out of those 30 kids, how many parents are facing this problem as far as the maths is concerned? Just tentative. I got your question, but I don't have any data to answer this. But maybe because you have seen a lot of children, you can tell me better. Okay. Chalo, let me come to the direct answer then. You need to understand there are so many distractions. Distraction level is very high nowadays. True. Since the screen has been introduced, so distraction level is very, very high. And the most disadvantageous thing about the screen is you are not supposed to use your brain. The screen has been designed just for the one purpose. Stop using your brain. Whatever we are showing you, enjoy it. Okay. And the maths is a subject. Maths is a subject where you need to use your brain. As we are seeing, we are on a screen on a regular basis. If the child is on a screen on a regular basis, his mind is tuned, conditioned not to use it. And when the maths comes, maths needs use your brain. And when you need to use your brain, the child starts struggling. And immediately the child feels it's tough because need to use the brain. Oh, so as humans, do you think Could you understand the connectivity between the screen and the maths? Very simple. They're different, yeah. Screen has been designed not to use the brain. Just relax and enjoy. Correct. But the maths is designed
to use the brain. Oh, so So Uncle, that is how the. do we help? In that case, how do we help? देखिए मैं तो एक चीज बहुत very strongly recommend to parents till age of 3 or even up to 4, don't give the exposure of the screen. You No mean at screen, all? not at all, not at all. Then see the difference, how the child is learning, his learning process, and everything goes. And nowadays, as you must be observing, there are so many cases related to autism. Yes. Screen is one of the reasons. For autism? Autism, yes. Autism is not a genetic problem, it's a developmental syndrome. As the child grows, according to surrounding and everything, the child is developing those symptoms. If the screen has been, that is one of the reasons, not the main reason, one of the reasons. So if we know that this is one of the reasons, so why to introduce it to our kids? But at the same time, Uncle, if we see, if children are watching educational programs, or these days See, each and every parent need to understand kids are the biggest copycats. True. If parents are on the screen, of course, kids would also want to be. Parents are always busy with the screen and everything. Grandparents are also busy with the screen, watching TV and everything. Naturally, the child will also demand it. True. True. Then we cannot ask the child, no, you don't watch it, you study. No, but then, Uncle, sometimes, see, let's say now that a lot of parents work through their computers. So when both the parents are busy working, even if you have a helper at home, you are in a nuclear family, grandparents are not living together. And then who looks after the kids? Because kids need somebody to play with them throughout. I mean, they can't be by themselves for a very long time. So, see, for working parents, I can also understand, but we can develop one thing, particularly in any child. The more exposure if we give of the books, if the child start reading from the early age, so then he or she will never ever go for the screen like a crazy. Okay. So we should promote books, more books instead of a screen. Okay. Oh, also, Uncle, how do we help a child figure out his real interest? Many a times we have seen adults who are not happy in their professions. However, at the same time, nowadays there are so many psychological tests are available in the market. Just consult any good psychologist. There are so many career counselors are also available there. So there are certain tests. Through the test, the interest area can be identified. Yeah, it can be easily find out. It can be easily identified, which is the particular area of the child's interest. So the child can make the. Nowadays, it has become very scientific. Very scientific. Those tests are very easily available. So many tests are available on the net also, but I won't prefer you to go for that. Go to some qualified psychologist. So, Uncle, at what age? Early At stage what age should see those tests and those career counseling guidance can be taken after the when the child reaches to the 9th grade, 8th or 9th grade. But before that, parents can find it out easily which particular field the child is enjoying more. Either he is enjoying maths, or he is enjoying the language part, or is he enjoying the EVS part, like surrounding social studies, or the child is enjoying the science, or is he enjoying geography, history. So it can be find out easily that
which particular thing is child is But more what about comfortable. their non-academic careers? Non-academic careers में you need to give them the exposure. Give them the exposure. Either the child can go into sports or even the fine art things, or even there are so many things are nowadays available. So give them the exposure. So as the child get the exposure, the child will pick up himself. No, I don't want to go for this skating. I want to go for the swimming. Okay. That's it. And Because initially you'll have to give. और फिर अगर किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में उसको एक्सपर्ट करना है, आई सीन मैनी पेरेंट्स की जिन्होंने बचपन से ही बच्चे को एम बना लेते कि उसको मेरे को टेनिस में लेके जाना है, एंड बाय द टाइम child is also interested in, so then giving the stressed exercises related to tennis, because when the expert has to, if you are talking about the experts, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल वाला एक्सपर्ट तब बनता है जब वो बचपन से चीजों को शुरू करता है. लुक एट द सचिन तेंदुलकर, व्हाट ही वाज डूइंग, एक सॉक्स में बॉल डाल के he was just hitting it, so he knew how to hit each and every ball. True. Also, so you'll have to, इसलिए मैं बोलता हूँ कि parents needs to develop the proper communication with the child. अगर बच्चे के साथ कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन का मतलब इट शुड नॉट बी मोनोलॉग, इट शुड बी द डायलॉग. यू आर आस्किंग समथिंग एंड द चाइल्ड इज एक्सप्लेनिंग. लेकिन होता उल्टा है, हम एक्सप्लेन ज्यादा करते हैं, बच्चों को कुछ नहीं बोलने देते. थ्रो गुड क्वेश्चंस एंड लेट हिम कम आउट, लेट द चाइल्ड एक्सप्लेन. जस्ट आस्क हिम कि हाउ वुड यू फील if you realize कि you are a very good swimmer. I'll feel nice. Very short answer. But you know what has to do for that? You'll have to learn swimming. Only learning will be enough or something extra? No, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत practice करनी पड़ती है. Then child will start. So allow it, create an atmosphere where the child should speak more. लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, उल्टा हो रहा है. पेरेंट्स ज्यादा बोल रहे हैं, बच्चा कम बोल रहा है, बच्चा से सुन रहा है. Okay. So parents needs to be more listener. Or listening is never only from ears. One has to do through the eyes also. जो बच्चा बोल रहा है कि just see the expression, how he is feeling. Is he really getting excited? उसकी आंखें क्या चमकीली हो रही हैं when he is talking about मेरे को तो swimming करने में बहुत मजा आएगा. Otherwise parent बोला नहीं swimming सीखना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. That's all. So such kids will never be able to develop any skill. और फिर सबसे बड़ी बात जो शुरू में हमारी बात हुई कि the child, our responsibility is to keep the child happy. True. और खुश रहने के लिए साथ साथ एक बहुत important चीज मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा कि make the child realize how it feels to be happy. और वो कैसे करेंगे अंकल? जस्ट उसको मिरर के सामने खड़ा करिए और उसको बोलिए कि अपने लिए बोलिए, मेरी तरफ गुस्से से देखो. तो देखेगा, एक्टिंग करेगा. बोले अब अपने आप को देखो, मेरे को देखो. बड़ा सपोज मैंने तुम्हारी स्पेशल गिफ्ट तुमको दी है, अब तुम कैसे लगे? बोले अच्छा लग रहा है. बोले अच्छा जो लग रहा है आंख बंद करके फील करो, गुस्सा होके कैसा फील हो रहा था और अच्छा होके कैसा फील हो रहा है. सो डिफरेंस शुड बी, ये थोड़ा एक्सरसाइज है. अगर आप हम बीच बीच में बच्चों के साथ करते रहें तो दे शुड नो हाउ टू फील हैप्पी. तो जब बच्चों को ये समझ में आएगा कि खुश कैसे रहा जाता है, उसके लिए दे विल स्टार्ट फाइंडिंग द वेज, दे देमसेल्व्स विल फाइंड द वेज. द मेन मोटो इज द चाइल्ड शुड बी हैप्पी. अगर किसी भी बच्चे का बचपन अगर खुशहाल में हुआ है ना, he will become a successful adult. True. अच्छा, एक और बात सुनने में आती करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई नहीं करता है. तो बच्चे को खुश कैसे रखने के लिए पहले उसको ये तो बताया जाए कि when you feel happy वो महसूस कैसा होता है. करेक्ट करेक्ट अंकल. आप सबसे पहले काम करिएगा, you do yourself this exercise. जस्ट फील कि जब हम अच्छा हो, फीलिंग हैप्पी की फीलिंग कैसी है,
हाँ हाँ सैड फीलिंग कैसी है, टेंशन की फीलिंग कैसी है, वो हम्म जब डिफरेंट शेड्स आपको समझ में आएंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू योर चाइल्ड. एंड आई ओके थिंक इट इज नॉट अ टफ थिंग. हाँ वी हाँ कैन इवन, हम 2 साल के बच्चों को भी सिखा सकते हैं हाउ टू फील हैप्पी. हाउ डज इट फील टू बी हैप्पी? correct correct uncle I'll try it out and I'll share a video also with you Yeah. then uncle I think how do we teach our kids that they are privileged because you know there are kids in the world who sleep hungry or who do not have enough clothes to wear, yeah, they don't have the privilege to go to school, get education. That ways if we compare our children, they are really privileged, but how do we make them realize that they are privileged? See, there's few things which can be explained through words, Mm-hmm. and few things we can use other senses. Just take kids on a ride. Mm-hmm. स्लम एरिया के पास में ले जाके गाड़ी रोकिए. Mm-hmm. Show them if any beggar is coming. Mm-hmm. Show them. लेकिन उस समय don't start preaching. Okay. पेरेंट्स के साथ नॉर्मली क्या होता है कि दे इमीडिएटली दे जंप ऑन द थिंग कि हाँ देखो इसके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है. उस हाँ समय कंपैरिजन मत करिए. उस समय उसकी फीलिंग को बताइए कि आई डोंट नो बेटा, ये जो बच्चा है ये कैसा फील कर रहा होगा इस टाइम. उसको फीलिंग के बारे में एक्सप्लेन करें. ओनली देन द चाइल्ड विल रियलाइज कि अंडर प्रिविलेज्ड होना किसको कहते हैं. इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू वर्ड्स. हम उनको बोलेंगे हाँ तो हाँ they will start thinking, they'll jump to the conclusion कि अब मेरी कुछ चीजें, मेरी फैसिलिटीज कट होने वाली हैं. Oh, okay. अच्छा अंकल They are एक और smarter. चीज They are the biggest blackmailer, I must tell you. They are the biggest blackmailer and biggest copycats. हाँ So make them feel it. And बोले कि उसकी फीलिंग कैसी होगी. बोले मुझे नहीं समझ में आ रहा how the child is feeling right now without shoes walking. Don't you think it must be hurting him? How do you feel? Few kids are sensitive, they'll explain. Few kids are not sensitive, they will not explain. They'll say, that's their parents' problem. Well, oh we should thank God. Well, okay, then we should thank God that your parents are not having a problem. We are providing you everything. Just drop it that way. But from time to time, you make them feel it. क्योंकि realization तभी होता है जब feel करते हैं हम किसी चीज को. और Without feeling, you cannot realize. ट्रू ट्रू अंकल बच्चों को पता क्या लगता है कि एटीएम का कार्ड मशीन में डाला और पैसे आ गए. Because they have seen it, ना. तो उन्हें ये नहीं पता है कि वो एक्चुअली पैसा कैसे आया है और उनको पैसे की वैल्यू किस तरह सिखाई जाए. Same thing happened with one of parent in Indore also. हाँ They put the same question. बोले सर ये समझ में नहीं आता, इसको कैसे समझाऊं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद ये बोलता है एटीएम कार्ड दे दो, एटीएम कार्ड दे दो. हाँ तो मैंने कहा आप करिए ना. हाँ तो चलिए उसको छोटा सा हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. आजकल उसको मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि आप अपनी वाइफ को एक न्यू अकाउंट ओपन करवाइए और उनका एटीएम कार्ड इशू करवा दीजिए. ठीक है. ओके. और उसमें अगर चाइल्ड इज माइनर तो माइनर अगर अटैच हो सकता है अकाउंट में तो उस माइनर को भी अटैच करवा दीजिए. ओके. They did it, and in the throughout the process they involved the child. It took 3 days. They involved him also. अब the father declared it very clearly कि this is the account. बोले ये बच्चे का नाम सोहम था. बोले सोहम, this is your card. और this is your bank account. They showed him the passbook also, bank statement कि अभी account opening के लिए 1,000 rupees I paid from my pocket. Okay. So it's up to you. Either you withdraw it from the ATM, or if you want to let it be there, it will increase as the interest comes. तो वो उन्होंने पेपर पे बैठ के उसको बकायदा सब सिस्टम पूरा एक्सप्लेन किया था. The child was in
थर्ड और फोर्थ ग्रेड, Okay. फोर्थ ग्रेड। तो उन्होंने पूरा उसको सिस्टम समझाया, तो द चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड। उसके बाद whenever the child was getting money from the relatives and all that, he used to give it to mom, go and put it in my account. Oh. But the first time what he did, without telling parents, he went to ATM and withdrew. हाँ, ATM गया और वहां से जब विड्रॉ करने लगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आया कैसे क्या करना है. He couldn't withdraw it. He came back, बोले ये तो it doesn't work. So then the father said कि either you should go with your mom or you should go with me. बोले come on, let's go. Instead of shouting at him, they said this is a learning process. Let's go. They went over there. उन्होंने पापा ने पूरा उसको बताया. बोले चलो how it works, I'll explain you. Insert the card. बोले do you know the PIN number? बोले what is that? बोले I told you, but you just missed it out. बोले चलो this is your PIN number. PIN number डाल के then उन्होंने 100 rupees withdraw करवाया उसको. अगले दिन जाके फादर ने मदर को बोला कि अब तुम पासवर्ड चेंज कर दो, पर चेंज कर दो, बट स्टिल ही कुड अंडरस्टैंड इट. तो देन ही स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. फिर फादर ने कहा कि मेरे अकाउंट में पैसे कैसे आ रहे हैं, बिकॉज़ आई एम वर्किंग थ्रू द डे, व्हाटएवर आई एम अर्निंग आई एम पुटिंग इन अ बैंक, देन आई टेक इट आउट. बोले आपके अकाउंट में तब आएंगे व्हेन यू विल बी वर्किंग. जब काम नहीं करोगे तो कैसे आएगा. तो वो थोड़ा प्रोसेस को पूरा प्रैक्टिकली यू नीड टू एक्सप्लेन. मतलब होल आइडिया इज कि आप सिर्फ उसको ये ना बोले कि ऐसा करो वैसा मत करो, बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं, तुमको इतनी अकल नहीं है, तुमको इतना भी समझ में नहीं आता. डोंट यूज दीस थिंग्स. ये जो आपने अभी जो ये बात बोली ना, बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं या बाकी लोग क्या सोचेंगे, कई बार हमारे डिसीजंस इस चीज पे बेस्ड होते हैं कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे. लेकिन हम अपने बच्चे को उस कॉन्शियसनेस से दूर रखना चाहते हैं. वी वांट देम टू हैव अ फ्री विल ऑफ चॉइस कि दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीबॉडी एल्स कि लोग क्या सोचेंगे इसलिए मैं ये ना करूं, चाहे मेरी इच्छा हो रही है वो करने की. तो इस तरह की चीज हम उनके अपब्रिंगिंग में कैसे लाएं? देखिए वही वाली चीज है कि अगर हम बच्चे को ये चीज सिखाना शुरू कर दें कि इट मैटर्स अ लॉट what you think about yourself, not what other people are thinking about you. और ये कैसे सिखा पाएंगे? इसके लिए क्या होता है कि देखिए बच्चे का सेल्फ एस्टीम is very much important. How the child is feeling about himself. अभी मैं I talk a lot about the feeling part. When the child starts understanding, parents start understanding what is the feeling part is. And feeling part is the main thing. Through that you can create a beautiful character in a child. While doing something the child is not feeling good, he will not do it. While doing something, if the child is feeling good, he will do it. The same thing happens in the academics also. Because screen है, screen को करते हुए उसको अच्छा लग रहा है तो he'll go for the screen. Doing maths, brain use करना पड़ रहा है, not feeling good, he will not go for it. So the feeling part is very much important. तो सेल्फ एस्टीम की व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ. अगर किसी बच्चे ने बोल दिया कि यू आर अ लूजर, सो डू यू थिंक यू आर अ लूजर? विल ही डिसाइड दैट यू आर अ लूजर? नो, इट्स अप टू यू टू. लोग क्या कहेंगे वाली चीज पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं होना चाहिए. चाइल्ड शुड टेक ओन डिसीजन. दैट इज द. कई बार अंकल ऐसा भी होता है कि जैसे बड़े हैं, पेरेंट्स नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स हो, अंकल आंट्स, कई बार ना वो बच्चों को कंपेयर करते हैं. मतलब चाहे जैसे नाना नानी है तो दो बेटियों के बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, या दादा दादी हैं तो कंपेयर कर रहे हैं बच्चों को कि ये तो ऐसा है या ये वैसी है. तो इस कंपैरिजन का असर मुझे लगता है कि बच्चों पर होता है. बहुत होता है. उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि whenever you are seeing कि the comparison has started, mother needs to jump in between. Either mother or the father, parents has to jump in between. And if it is coming from the grandparents, so your first statement should be, yes, you are right, but yes, you are right. Why? Not to offend them. Offend them. Not to insult. Okay. ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो लोग जल्दी
बुरा मान जाते हैं. हाँ. बोले yes 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 you are very right but हाँ. मैंने I feel इसके अंदर ये अच्छी क्वालिटी उसके अंदर ये अच्छी क्वालिटी. Every individual is different. Correct. So at the same time, we need to tell a good quality about the child who has been compared inferior. Yeah. ऐसा तो होगा नहीं बच्चे में एक भी क्वालिटी नहीं हो. हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और हर बिल्कुल, अब जैसे मैं और मेरे हस्बैंड, हम दो अलग इंडिविजुअल्स हैं. हमारी जीन्स हमारे बच्चों में गए हैं, किसी में कुछ गया है, किसी में कुछ गया है, तो दोनों बच्चे अलग हैं. लेकिन जैसे कंपैरिजन आता है बच्चों में, तो ये आपने बहुत ही सही बात कही कि हमें उसको अप्रिशिएट करके उसको उस तरह का कॉन्फिडेंस देना है कि ही इज डिफरेंटली गुड, शी इज डिफरेंटली गुड. होता क्या है कि देखिए पेरेंट्स भी ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं बच्चों को. बच्चा कभी उसका सेल्फ एस्टीम इसीलिए लो होता है क्योंकि वो कुछ भी अच्छा करता है तो उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता. जैसे मैंने 5 love languages में कहा था कि वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन इज मोस्ट पावरफुल लव लैंग्वेज. करेक्ट. आप उसको भले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको डिक्लेयर करते रहिए. भले उस बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, लेकिन अगर उसका किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया, बोले यू डिड सो वेल, आई नो यू कैन डू दैट आल्सो. तो तारीफ उसकी करते रहना चाहिए. एनीथिंग डन, क्योंकि वो तभी अप्रिसिएशन करना सीखेंगे, ओनली देन दे विल अप्रिशिएट यू. क्योंकि अल्टीमेट हम लोगों का गोल क्या होता है कि देयर शुड बी अ गुड बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड द किड्स. करेक्ट. लेकिन वो बॉन्डिंग क्यों नहीं डेवलप हो पाती है? क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से फिंगर आ जाती है, ये करो, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो. हाँ, लेकिन अगर बच्चे को अगर फ्री विल दे दी, वो तो सारा दिन जो उसका मन करेगा वही करता रहेगा, और हो सकता है वो कुछ उसके लिए अच्छा हो, कुछ उसके लिए अच्छा ना हो. हाँ. नहीं, उसका फ्री टाइम भी उसके लिए जरूरी है. पर मतलब वो जो भी कर रहा है उसको अप्रिशिएट तो करें ना. कम्युनिकेशन अच्छा हो तो फिर हम सब चीजें कर सकते हैं. अगर मान लीजिए स्टडी टाइम में बच्चे बोल रहे हैं कि मेरे को तो गेम खेलना है, बोले गिव मी द रीजन, गिव मी 2 रीजंस, स्ट्रांग रीजन. बोले मन कर रहा है, बोले नहीं दिस इज नॉट द रीजन. बोले मेरा भी मन नहीं कर रहा तुमको देने का, गिव मी द रीजन. तो मेक इट इन अ फनी वे में. तो जब बच्चों को लगेगा कि ये तो डिफिकल्ट है, तो दे विल कम ऑन द ट्रैक. ओह, वैसे ये आपने बहुत ही सही चीज बताई अंकल, कि जब वो खुद फिर बेटर रीजनिंग कर पाएंगे अपने एक्शंस की, जो चीज आपने कही अभी. क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है कि विदाउट थिंकिंग द कन्वर्सेशन इज गोइंग विदाउट थिंकिंग. एंड वी आर नॉट अवेयर व्हाट वी आर सेइंग. ये हम लोगों के साथ भी होता है, बच्चों के साथ तो ज्यादा होगा. व्हेन वी आर मेकिंग अ चाइल्ड, कि डू यू रियलाइज कि व्हाट यू आर सेइंग, अभी इस स्टेटमेंट का मीनिंग बच्चे को नहीं मालूम. हम आपस में बड़ों को बोलते हैं डू यू रियलाइज व्हाट यू आर सेइंग, तो ये इसको हम बड़े इंसल्टिंग वे में लेते हैं. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि वी शुड रियलाइज व्हाट वी आर सेइंग. बच्चों से इसलिए हम क्या करना चाहिए, वी शुड आस्क क्वेश्चन, गिव मी द रीजन, गिव मी द रीजन. ये जो आपने रियलाइजेशन वाली बात कही अंकल, क्या होता है कि मतलब जैसे मैं माँ हूँ, चैम को मुझे कई बार है ना, 1 बार 2 बार 3 बार बोलना पड़ता है अगर वो मेरी बात नहीं मान रहा है. और चौथी बार मैंने अपना वॉल्यूम रेज किया, चैम मैंने आपको 3 बार बोल दिया था, आपने अपनी खाने की प्लेट उठा के अभी तक के रखी नहीं है. तो वो चौथी बार में मेरा वॉल्यूम अपने आप हाई हो जाता है. मैं उसको डांटना नहीं चाहती, मेरा इंटेंशन उसको डांटने का नहीं है, लेकिन जब मुझे एक ही चीज उसको बार बार समझानी पड़ रही है और वो फिर भी नहीं वो चीज कर रहा, तो फिर मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं, या फिर मैं उसको कैसे सिखाऊं वो चीज. जैसे डिनर प्लेट नहीं उठाई, अपन इसी को फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं. हाँ. ओके. एक बार में अगर उसने नहीं सुना, हाँ. सेकंड टाइम में भी नहीं सुना, हाँ. थर्ड टाइम में जस्ट आई कांटेक्ट करके बात करने का बोल दिया. आई कांटेक्ट बना के जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शन. बोले कम लुक एट मी, आई वांट दिस प्लेट टू बी ओवर देयर. एंड यू नो व्हाई, पूछ लीजिए, एंड यू नो व्हाई आई एम सेइंग इट. ही वोंट हैव द आंसर. बोले नो. बोले so that
I don't want to repeat it again and again. I don't want you to feel bad. क्योंकि मेरा तो वॉल्यूम बढ़ेगा फिर. Oh, okay. क्योंकि जितना भी कम्युनिकेशन होता है बिना आई कांटेक्ट बनाया होता है. हाँ मतलब हम बोले जा अब वो, लेकिन अंकल कान से सुन तो रही है. वो तो यहाँ से सुन के यहाँ से भी निकलता है, यहाँ सुन के यहीं से निकलता है. आई कांटेक्ट बनेगा, आई हाँ. कांटेक्ट बना के बोलिए, बोले लुक एट मी, लुक एट मी. बोले हाँ, बोले जस्ट 1 सेकंड लगेगा. पिक द प्लेट, पुट इट इन द बेस. लुक एट मी. और उसके बाद अब ये हुआ जब आई कांटेक्ट बनेगा तो वो काम हो जाएगा. आई कांटेक्ट बनेगा तो डेफिनेटली फॉलो इट. तो ठीक है अंकल, नेक्स्ट टाइम मैं ये आई कांटेक्ट वाली ट्रिक ट्राई करूंगी. एक और चीज क्या हुई कि वो ना मुझे कॉपी करने लगा है. जैसे मैं चैम्प से बड़ी हूँ और चैम्प अपनी छोटी बहन से बड़ा है, ठीक है. तो जैसे चैम्प मेरी बात नहीं मानता और मैं 4th टाइम में अगर चिल्लाने लग रही हूँ तो वैसे ही वो ना छोटी वाली के साथ कर रहा है. तो ना उसको वो बोलेगा कू सोफे पे बैठ के आपको सीरियल नहीं खाना है, सोफे पे बैठ के आपको सीरियल नहीं खाना. वो नहीं सुनी, कू हु सोफे पे बैठ के आपको सीरियल नहीं खाना है. तो I told you ना, they are the biggest copycat. Biggest copycat. तो ये हो रहेगा, ये तो होगा. Yeah, but I will try to better control myself, and I will try this eye contact thing. Yeah, eye contact. So one last question for today that I have is, as you said that children have different ways to learn. How do we identify which is the right way of learning for our child? See, nowadays all the schools are very advanced and they are having a special educator in every school. I think in your kids' school, there must be some special educator also. So you can take their services. Because at such a distance, I cannot explain you ki uska kya pattern hoga. So take their services. You can have a meeting with them so that you can, and in case they ask you ki why you are asking all these things, well, I just want to help him out so that the learning should become fun for him and the learning should be easy for him. Easy in the sense कि he should not struggle. अगर उसको auditory तरीके से समझना है, सुन के समझता है, तो वो they'll guide you इसका learning pattern क्या है. Nowadays all the teachers are trained for this particular pattern also. All the teachers are trained. Yeah. If the teacher is not, if you feel the teacher is not trained, then you can ask, can I fix an appointment with your special educator? Special educator will explain you कि उसका क्या pattern है, और accordingly they'll design the things and they'll guide the teachers also. अगर special educator नहीं कर पाए तो then talk to the principal and make him understand कि this is the basic thing. India में तो in every school CBSE is very strict. Every school should have one special educator. I think this even in Singapore maybe होगा ये तो. There must be some. Explored, but I can find out. Even in your kids' school there must be some special educator. तो आप उनकी सर्विस लेने ही तो प्रिंसिपल से बात करिए. They are also very qualified, so they'll help you out. वो उसका learning pattern क्या है, उस pattern को अपन अगर समझ जाते हैं, so that we can help him the child at home as well. Yeah. और अगर वो अगर उनके पास स्कूल से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फाइंड सम गुड साइकोलॉजिस्ट. अर्ली एज में ये वाले टेस्ट भी होते हैं, तो यू कैन गेट दैट टेस्ट डन. तो थ्रू दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि उसका लर्निंग पैटर्न क्या है, तो हम उस हिसाब से उसको चीजों को करके चलें. बट डोंट टेक ऑल दोज थिंग्स एज ए बिल्कुल फिक्स्ड थिंग की तरह मत लीजिएगा, नहीं तो पता चला दूसरा एरिया उसका स्किल्स उसके डेवलप नहीं हो पाएंगे. पता चला कि उसको ऑडिटरी उसका स्ट्रांग है तो ऑडिटरी से जल्दी सीख रहा है, और विजुअल्स में वो फिर ध्यान नहीं देगा, उसकी फिर ड्राइंग पुअर होगी. तो जस्ट उसको एक सपोर्टिंग की तरह लीजिएगा, बट नॉट एज एन फिक्स्ड रूल. आप करवा लीजिए किसी से भी टेस्ट, रिपोर्ट मेरे को भेज दीजिएगा, देन विल डिस्कस अबाउट इट. अंकल, आई एम फॉर्चुनेट टू बी इन कांटेक्ट विद यू कि मुझे कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं आपसे बेझिझक पूछ लेती हूँ. इसी तरह बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो आपकी मदद लेना चाहें, तो व्हाट इज द वे दैट दे कैन कांटेक्ट यू ऑन योर ईमेल एड्रेस और नंबर, और हाउ वी कैन प्लान इट आउट, क्योंकि और भी कई जगह के पेरेंट्स हैं जो मेरे से काउंसिल करते हैं. तो
under contract करके फिर I can counsel them as and when their issues are popping up, either it is related with the academic or the behavior. तो हम उसके ऊपर workout कर सकते हैं. That's not a big thing. It's not a big issue. Wonderful, Uncle. Uncle, thank you. Thank you so much. It has been a great session. I got to learn wonderful things from you, and I'm sure the parents are going to benefit from this a lot. Okay, thank you. Give my love to kids.